Hello everyone, welcome to a fresh session of MSG the online classes. From today we are going to start our online classes for classes students on mathematics subject. So let's get started. So the first chapter of class 8 on mathematics is rational number. Okay. As we have already acquainted with what is rational number, what is number system in class 7. So we have to remind them. So first of all, we have to get an idea about what is number system. Okay, what is number system? As we know, there are about 6 types of sets present in mathematics. What are they? They are n, okay, n star, okay, z, q, q star, and R. So first of all, we will discuss about what is n. So first, what is n? N is the set of natural number. Okay, n is the set of natural number. ताले हमें n को कौन कहबा? Natural number set बोले कहबा. आपको अब कौन कहा जाए? गणन संख्या. So the set n is a set of natural numbers. So it starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite number of terms. So the set starts from 1, 2, 3, 4 up to infinite. Okay? ताले हम जाने वाले ये गणन संख्या सेट सबले केतरु आरंभ हुए 1 रु आरंभ हुए आ अगणित असंख्य पर्यंत व्यापित है. बुझियला? So next, what is n star? It is also known as W. Okay, so n star is the set of whole number. आपको मैं ओडिया रे कोन कही? स्वाभाविक संख्या. स्वाभाविक संख्या. Understood? ताले गोटे स्वाभाविक संख्या और whole number starts from which number? It starts from 0. So it starts from 0. So after 0 we have 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite. Bujhela? Tale n star is a set of whole number and it starts from 0 to infinite number of terms. See here, in the number system or in the n star we have 0 to infinite, but as you know 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite is known as natural number. मानक में कौन कहला? गणन संख्या कहबा. किंतु टोटल टाको में कौन कहबा? होल नंबर कहबा और n स्टार कहबा. ताले बड़ किए? टोटल टा इटा बड़ ना इटा बड़? n स्टार इज बड़. So we can write n star is greater than n. So n star is greater than n. So then comes to the set of z. The set z is known as set of integers. Okay, it is also known as in Odia पूर्ण संख्या. So ताले गोटे set of integer कितने आरंभ होता है और कितने शेष होता है? Always remind the set of integer always contains a negative number, some positive numbers and a 0 in the middle. Okay, so it contains 0 in the middle. Towards its left it will contain negative number, okay, up to minus infinite, and towards its right it will contain positive number. Understood? So integers contain negative numbers, positive numbers as well as 0. Okay, then we will study about what is q. Q is also known as rational number. It is the set of rational number. Okay, and known as परिमेय संख्या. So in this topic and in this session we will basically discuss about what is a rational number. Okay, so let's start with rational number, and it is abbreviatory known as q. ताले आता में कौन लिखूं? q बोले लिखूं. बुझियो जी? So rational number हमें कहाँ को कहते हैं? Rational number is can be expressed in the form of p by q.
ओके ताले रेशनल नंबर को हम को फॉर्म रे एक्सप्रेस कर परिबा p by q फॉर्म में प्रकाश कर परिबा फॉर एग्जांपल एनी एग्जांपल 3 by 5 इट इज ए फ्रैक्शन एटा गोटे कोन भग्नांश इट हैज सम न्यूमरेटर and it has a denominator okay and it is expressed in which form numerator divided by denominator or log by हर ताले जो संख्या को हमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आकार एक्सप्रेस करि परिबा ताको हमें कोन कहि परिबा रेशनल नंबर सो व्हाट इज a rational number any number that can be okay represented in which form that can be represented in p by q form okay जो नंबर को हमें p by q और न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में एक्सप्रेस करि परिबा ताको हमें कोन कहि परिबा रेशनल नंबर कहि फॉर एग्जांपल 3 divided by 5 it is a type of fraction and it has a numerator what is the numerator 3 is the numerator and 5 is the denominator okay let's say this is p and let's say this is q so this fraction can be expressed in the form p by q bujhiye so then in this case it is type of fraction so any fraction or any number which can be expressed in p by q form is called a rational number केवल जे p by q फॉर्म रे एक्सप्रेस करले हम ताको रेशनल नंबर कहबा सेमिति भी कोनोसी माने नै we have to follow some conditions so what are that conditions ताले रेशनल नंबर होबा पय किछि कंडीशन दरकार कोन से कंडीशन गडा को फर्स्ट कंडीशन 1 कोन सेटा p का कहबा जाय रे न्यूमरेटर okay so p belongs to this symbol is called belongs to z is known as integers okay so it means tale mane kon na p or the numerator is any number from integers ta mane p gote kon heithwa darkar p gote integer heithwa darkar bujhi hela ki nahi p mane kon numerator so numerator must be an integer okay so second condition is q को kon kah jaye denominator okay q also must belongs to z it means q is any number from the integers या माने कोन हला ना q बा डिनोमिनेटर उटे कोन हिथो दरकार इंटीजर हिथो दरकार अब इंटीजर कहा कहबा ना जोथरे 0 थिबो मझी रे लेफ्ट रे थिबो नेगेटिव नंबर राइट रे थिबो पॉजिटिव नंबर सो न्यूमरेटर टा एक इंटीजर हिथिबो डिनोमिनेटर मस्ट बी एन इंटीजर सो थर्ड कंडीशन इज q not equal to 0 it means q is known as denominator so it means q can never be 0 ta mane kon na q kebe भी 0 होबो नाही बुझियला ta mane denominator kebe भी 0 होबो जदि ए तीनटा कंडीशन को से सैटिस्फाई कर दबो जे कोन से नंबर then it will be a rational number or it is any number understood so let us take some example suppose we have some example suppose 3 by 9 okay we have to identify whether 3 by 9 is a rational number or it is an irrational number or integer or whatever okay ताले आपको हम रेशनल नंबर केते बेले कहबा जदी ये p by q फॉर्म रे एक्सप्रेस हे परथबो ताले देखिलो एटा p by q फॉर्म रे एक्सप्रेस हे परछ ना नाही यस एटा p by q फॉर्म एक्सप्रेस हे परछ काहे कि एटा कोन कहा जाय न्यूमरेटर कहा जाय 9 टा कोन कहा जाय denominator कहा जाय okay so it can be expressed in the form p by q so this step gone तापर एटा ए तीनटा कंडीशन को से सैटिस्फाई करिवो ना करिवो सेटा हमें बर्तन आइडेंटिफाई करिवो एठी देखो p काहा को कहबा एटा को हम p कहि परिबा कि नहीं q काहा को कहबा 9 को q कहबा अंडरस्टूड सो फर्स्ट कंडीशन देखिबा फर्स्ट कंडीशन है p means k 3 अच्छा 3 is a set of integer or not yes 3 is a type of integer okay it is a type of positive integer so we can write 3 belongs to z काहे कि ना तीनटा उडा कोन integer again next condition
Next condition is q. Q means 9. Okay, 9 ta gote integer na 9. 9 also a positive integer, so we can write 9 belongs to z. तले फर्स्ट कंडीशन को सैटिस्फाई कर देला, सेकंड कंडीशन भी सैटिस्फाइड है गला। थर्ड कंडीशन बतन देखिबा। थर्ड कंडीशन हैला q not equal to 0, that means q means denominator। अच्छा ये डिनोमिनेटर किया है 9, 9 टा काउंट 0 की नो, सो q not equal to 0, सो ये कंडीशन भी कोन है गला satisfied है गला। सिंस it satisfies all these three conditions, so 3/9 is a rational number। Are you getting my point? Then next we have to take another example. Suppose we have 7. Okay, whether 7 is a rational number or not. Actually 7 is a which type of number? 7 is a natural number। साथ में कौन कहबा गोटे गणन संख्या कहबा कि नहीं। बर्तमान देखिबा since 7 is a natural number, can it be a rational number? एटा कोन गोटे rational number हे परिबो की देखिबा। अच्छा, we can write 7 as 7/1। साथ में लिख परिबा 7/1 देखि परिबा। ताले ठीक न्यूमरेटर की है 7, डिनोमिनेटर की है 1, बुझियला। एंड so it is can be expressed in the form p by q, लव by हर आकार हम एटा को एक्सप्रेस करि परिबा। ताले फर्स्ट केस satisfied। now we will watch whether all these three conditions will satisfy। so first p belongs to z। p means here p is 7। okay, 7 is an integer or not? Yes, 7 is an integer, so 7 belongs to z। second, q belongs to z। q means denominator, here denominator is 1। okay, 1 is a type of integer or not? It is a type of integer, so we can write 1 belongs to z। okay, two conditions get satisfied। now comes to the third one। now the third condition होची q not equal to 0, ता माने डिनोमिनेटर टा केबे 0 होबो नहीं। ये डिनोमिनेटर 0 हिची की नो, इट इज नॉट 0, so we can write 1 not equal to 0। so it satisfies all the three conditions and it is also expressed in form p by q, so it is a rational number। किंतु प्रथम हम कोन जानथे 7 गोटे को प्रकार नंबर नेचुरल नंबर थिला, तो सेटा को प्रकार नंबर हे गला रेशनल नंबर हे गला। तले we get a conclusion that every natural number is a rational number। तले प्रत्येक नेचुरल नंबर गोटे rational number हे परिबो। like you can take 3 टा गोटे नेचुरल नंबर, but it is also a rational number। why? because आपको हमें 3/1 को लिख परिबा। तो बुझियो कि नहीं। आउट एग्जांपल हमने इस बार 10, तले 10 टा को हम लिख परिबा 10 divided by 1, so it is also a rational number। तले we can write a rule। what is the rule? rule 1। rule 1 कौन कहला जे प्रत्येक नेचुरल नंबर गोटे गोटे रेशनल नंबर हे पाए। all the natural numbers are rational। okay, बुझियला एटा। let's take another example of it, note it down। suppose we have one more example। suppose -7। okay, -7 is a natural number or a whole number or an integer? it is an integer। why? because गोटे integer रे नेगेटिव नंबर भी थाए, पॉजिटिव नंबर भी थाए, जीरो भी थाए, so it contains negative number, so it is a type of integer। ताले गोटे कोन हेतिबो integer हेतिबो। okay, now we can write -7 as -7/1। ताले हम -7 को -7/1 लिखि परिबा कि नहीं? लिखि परिबा। अच्छा, ताले न्यूमरेटर केते हे गला -7, डिनोमिनेटर केते हे गला 1, so it is expressed in the form p by q। okay, so it satisfies। then first condition होची न्यूमरेटर। what is the numerator? -7। अच्छा, -7 गोटे इंटीजर ना नहीं? yes, it is an integer, so we can write -7 belongs to z। then second condition 1 is the denominator। अच्छा, 1 टा गोटे इंटीजर कि नहीं? it is an integer, so we can write 1 belongs to z।
Then third condition. Third condition is q not equal to 0. Here also the denominator is not 0. So we can write 1 not equal to 0. So it satisfies all the three conditions. So it will be a rational number. But in the first we have taken it is a integer. प्रथम हमें कौन जाने थे माइनस 7 गोटे इंटीजर किंतु लास्ट को हमें कौन पाइले माइनस 7 गोटे कौन नंबर पाइले इट इज ए रेशनल नंबर बुझियला ताले कौन जानिले प्रत्येक इंटीजर को हमें रेशनल नंबर भी कहि पारिबा लाइक -9 we can write -9 as -9 by 1 -7 as -7 by 1 -33 as -33 by 1. So every integer will be a rational number. So this is the rule 2. So note down what is rule 2. Every integer, okay, is a rational number. बुझियला प्रत्येक इंटीजर को हमें रेशनल नंबर भी कहि पारिबा रूल 1 कोन थिला एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशनल फॉर्म एंड रूल 2 हला एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर ओके नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल सपोज example 0 is a which type of number it is a special number okay 0 is a type of special number and 0 is undergoing n star that means it is a whole number okay बर्तमान देखिबा एटा हम कोन जानले न्यूमरेटर होल नंबर बर्तमान हम देखिबा जे गोटे 0 टा को हम रेशनल नंबर कहि परिबा नै okay okay we can write 0 as 0 by 1 why because the value of 0 by 1 is 0 तो 0 बदला हम लिख परिबा कि नै 0 by 1 देखि परिबा तापर एठी 0 टा कोन कहा जाय न्यूमरेटर कहा जाय ओके एंड 1 टा को कोन कहा जाय डिनोमिनेटर कहा जाय बुझियो जी नाउ हमें देखिबा एटा p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करी हला कि यस एको हम 0 by 1 फॉर्म में एक्सप्रेस करी परिले नाउ कम्स टू द कंडीशंस फर्स्ट कंडीशन हला न्यूमरेटर कि 0 अच्छा 0 गोटे इंटीजर ना यस 0 गोटे इंटीजर पाए काई ना इंटीजर रे 0 भी थाए पॉजिटिव नंबर भी थाए नेगेटिव नंबर भी थाए ताले 0 गोटे इंटीजर हे परिबो कि नै हेई परिबो सो वी कैन राइट 0 बिलोंग्स टू z okay next condition the denominator is 1 is also an integer so we can write 1 belongs to z third condition q not equal to 0 ता माने डिनोमिनेटर केबे भी 0 ही परिबो इट देखिला डिनोमिनेटर ता 0 की no it is 1 it is not 0 so 1 not equal to 0 so it satisfies all the three conditions so it is a type of rational number but किबा प्रथमे कोन नै थिले एटा गोटे को नंबर होल नंबर किंतु कोन हला एटा गोटे रेशनल नंबर हला ताले मैं कहि परिबे कि नै जे एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर rule 3 is every whole number is a rational number so write it down rule 3 so rule 3 what is that every whole number is a or is also rational number okay ताले सबु जाक होल नंबर गोटे रेशनल नंबर ही पाइबो ताले तीनटा रूल हम बर्तन पढिले फर्स्ट रूल कोन कहला every natural number is a rational number second rule says that every integer is also a rational number a third rule कहला every whole number is a rational number understood okay. Now we will study about the types of rational number okay so what are the types of rational number on the basis of sign means positive sign or negative sign ता माने पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन अनुसार रेशनल नंबर केते प्रकार हैला बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइन रेशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स केते प्रकार ताले दुई प्रकार कौन कौन ना पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर ओके
negative rational number. Now we will identify which is positive and which is negative. Okay, ताले कोटा positive rational number में केमिति जानिबा? See, suppose we have a question. Suppose one example अछि 3 divided by 2. Here numerator is 3. ताले 3 को हमें कौन कहबा? Numerator कहबा. And 2 is called denominator. Okay, in this case the sign of 3 is what? माने 3 रो 5 साइड जो चिन्ह अछि को चिन्ह अछि? पॉजिटिव चिन्ह. यस. 2 रो लेफ्ट साइड को चिन्ह अछि? पॉजिटिव सिंबल. ओके, तारे both numerator और denominator रो साइन समान अछि. So if the sign of both numerator and denominator are equal, then it is positive rational number. Understood? So what we will say? If sign of numerator and denominator, okay, are same, ताले जदि numerator और denominator रो साइन समान रहइबो ताले ताको हमें कोन कहबा? Positive rational number कहबा. So it is a positive rational number. Let's take one more example. Suppose we have 3 by 5. Okay, एठी कोन होची? न्यूमरेटर साइन कोन? पॉजिटिव. डिनोमिनेटर साइन कोन? पॉजिटिव. ताले बोथ न्यूमरेटर साइन जा है, डिनोमिनेटर भी साइन सेम. सो इट इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर. बुझियला? आउट एग्जांपल नंबर -7 by 3. Okay, here the sign of numerator is negative. Our sign of denominator is positive. Tell देखो यार negative sign, यार positive sign. So the two signs are equal or different? They are different. Since they are different, so they cannot be positive. जेहेतु से माने different अछन sign रे तेनु से माने केबे भी positive rational number हे परिबे नहीं. Okay, one more example. -5 by -2. अच्छा, ठीक एक केस रे कहला what is the sign of numerator? Negative. What is the sign of denominator? Also negative. ताले हम एठी देखिले both numerator और denominator sign होची negative. ता माने sign are equal or different? They are equal. हम जानि छे यदि sign same हे जिवो ताले ताको हम कोन कहबा? Positive rational number. Okay, so it is a type of positive rational number if the two signs of both numerator and denominator are equal. बुझियला? ताले बुझियला पे positive rational number कहा को कहेगा. So let's get an idea about what is negative rational number. So what is a negative rational number? If sign of numerator, n means numerator, and denominator are different. Okay, ताले कहा को हमें कहबा नेगेटिव रेशनल नंबर if the sign of numerator and the denominator are different. यदि दुईटा रो साइन कोन हेतिबो? डिफरेंट हेतिबो. लेट्स टेक एन एग्जांपल -7 by -2. Okay, here numerator sign is negative, here denominator sign is negative. So these two numerator and denominator signs are same or different? They are same. Since they are same, so they cannot be negative. Why? Negative भाबे कोन दरकार? दुटा को अलगा दरकार. किंतु दुटा को अलगा अछि कि नाही? सेम अछि. तले माने नेगेटिव रेशनल नंबर हे पाइबे कि? नो. माने कोन हेबे? पॉजिटिव रेशनल नंबर हेबे. ओके, आउट एग्जांपल ले जिबा -5 by +7. Okay, so here the sign of numerator is negative and sign of denominator is positive. ताले बे देखो both the sign of numerator and the denominator are different. They are not equal. So it is a negative rational number. So we can easily identify what is a positive rational number, what is a negative rational number. Now let us discuss another two types of rational number. As we know, on the basis of fraction, rational numbers are of two types.
Okay, what is one is proper and other is improper. Okay, अच्छा तो हमें जाने चाहिए जे रेशनल नंबर इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन. व्हाई? काहे ना फ्रैक्शन को हमें न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आकार एक्सप्रेस करू. एक्जेक्टली और रेशनल नंबर को हमें न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आकार एक्सप्रेस करू. दैट्स व्हाई on the basis of fraction the rational number is of two type. One is proper rational number and other is improper rational number. Now we have to find out or we have to define what is a proper rational number. अच्छा, let's take an example. Suppose गोटे exam हेची and से exam रे मु suppose 30 मार्क रखछि out of 50. Okay, केते मार्क 30 मार्क out of 50. ताले जे examiner मग आंसर शीट रे मार्क केमति का लिखिबे केते रखछि मु 30 रखछि हि से ताले एमिति लिख परंती किंबा एमिति लिख परंती. ना माय टास्क इज टू डिटरमाइन व्हिच वन इज करेक्ट. एबे ताले कोटा करेक्ट जे मु केते मार्क पाइली 30 मार्क पाइली आउट ऑफ केते पाइली 50 पाइली. ताले बर्तमान मु देखिबे आर माने कोन आ जो कोटा एग्जैक्टली मो आंसर शीट रे लिखा जाय. सो बिफोर दैट आउट इन सम को एठी देखिबार अछि. सपोज गोटे फ्रैक्शन हम नवा 1 डिवाइडेड बाय 2. Okay, first we have to know what is the meaning of this fraction. A fraction of meaning कौन? आर meaning है ला one part out of two part. ता माने दुई भाग रो गोटे भाग. बुझी हला? Like suppose this is a cube और cuboid. ताको तला हम केते भाग करबे दुई भाग. तो दुई भाग केते भाग कलर हेचियो गोटे भाग कलर हेतिबो. ताले बुझी हला? सो तो फ्रैक्शन ऑफ मीनिंग कौन हेला? दुई भाग रो गोटे भाग. माने गोटे बड़ जिंस अछि ताको हम दुई भाग कर दबा. करले कोन हो छोट छोट खंड आसीबो जतरो खंड हम नै जिबा. ओके, तो वन बाय रो मीनिंग हैला कोन वन पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट. एग्जैक्टली 3/7 यार मीनिंग कोन 7 पार्ट्स रो केते पार्ट्स 3 पार्ट्स. त माने बड़ संख्या छोट संख्या जाई परिबो केना बड़ संख्या गोटे जिंस अछि बड़ जिंस ताको हम छोट छोट करी काटिबा ताले छोट छोट जिंस बाहरिबो कि नै. तो 7 भाग रो केते भाग हम नै जिबा 3 भाग नै जिबा. So we can write it as 3 parts out of 7 parts. Total 7 parts thila. Setro 3 parts can be removed out. Okay. तला ए फ्रैक्शन ऑफ मीनिंग कोन बुझी हला. ताको बेस करी बर्तन देखिबा जे आथरो कोटा हम बाय करेक्ट. ओके. हियर इन दिस केस यार मीनिंग कोन देखो डिनोमिनेटर केते अछि 30 न्यूमरेटर अछि 50. तला यार मीनिंग हला कोन 30 पार्ट्स रु 50 पार्ट्स माने कम रु बेसी. मो पाखर अछि दीटा लेंबू कि मु कहना मते दीटा रो चारटा लेंबू दियो. इज इट करेक्ट? मिछ कथा इम्पॉसिबल. एटी सेंटी जिंस अछि जे 30 मार्क मु रखि छी 50 मार्क. इज इट पॉसिबल? मु 30 मार्क के 50 मार्क रखि पारे कि? नो, इम्पॉसिबल. सो इट इज इम्पॉसिबल. ओके, बुझला? बर्तन ए केस ओवर बुझिबा. यार मीनिंग कोन यार डिनोमिनेटर अछि 50. सो इट मींस 50 मार्क्स रूम रखि छी 30 मार्क्स. काहे ना बेसी मार्क कम मार्क रखि हबो किंतु कम मार्क बेसी मार्क भी रखि हबो नाही. ताले इट मींस out of 50 marks I have got 30 marks. So it is correct. बुझियला? Because it is a fraction which is possible. ताले ई fraction दा होची possible. Okay, because मु बेसी मार्क कम मार्क परबी किंतु कम मार्क बेसी मार्क परबी नि. गुडे छोट जिंस को ए देखो डिनोमिनेटर टा होची कोन स्मॉल. छोट जिंस तो जते काटिबो से आरो छोट होबो ना बड़ होबो छोट होबो ना. किंतु एठी कोन हेची छोट जिंस रो कोन हेची बड़ हेची. which is impossible. But in this case बेसी मार्क थिला सेतु मु रखली कम मार्क and it is possible. Since it is possible and this possible fraction is known as proper fraction and this fraction is known as proper fraction. बुझियला? ताले बर्तमान जानिया दरकार ताले proper fraction रो डेफिनेशन कोन. How can we define a proper fraction? See in this case here in this fraction 30 को कौन कहा जाए न्यूमरेटर. ओके, 50 is known as denominator. बुझियला? तो 30 को कहा न्यूमरेटर और 50 को कहा denominator. So here whether numerator is large or denominator is large बड़ा की है एथिरो सब 50 टा बड़ा and 50 is denominator. ताले को कोन हम डिफाइन करले जदी गोटे फ्रैक्शन रो डिनोमिनेटर टा बड़ा हेथिबो का थारु न्यूमरेटर थारु then it will be a proper fraction. Okay,
So what is a proper fraction? If denominator. If denominator is bigger. Okay. जानी हबो केमती का हमें गोटे proper fraction को identify करिबा. Let's take one more example. Suppose 3 whole divided by 8. Okay, 3 whole divided by 8. Here, in this case, it is a fraction because it can be expressed in p by q form. And here, 3 is the numerator. Okay, and 8 is the denominator. Understood? ताहले बड़ा क्या है? Denominator is larger. As we know, if the denominator is larger or bigger, then it is a proper fraction. So this is a proper fraction. Understood? ताहले पे जिबा improper fraction आडको देखिबा जे improper fraction कहा को कहंतु. See, in this example, out of these two, which is possible? This one is possible and this one is impossible. Impossible means वास्तव दुनिया रे एटा केबे भी संभव न. संभव की जने 30 मार्क के 50 मार्क अचीव करि पारिबो नो, since it is impossible in real life. So this fraction is known as improper fraction, as we have already learned about it in the class 7. So impossible fraction को कोन कहा जाय? Improper fraction कहा जाय. बुझियला काहे कि ना हम केबे भी 30 मार्क्स रो 50 मार्क्स रखि पारिबिनी, which is unreal, मिछ कथा, impossible. So this fraction is known as improper fraction. And tala improper fraction hame kaha ko kaheba? Can we define it? Yes, we can define it. Here 50 is numerator. Yes, and 30 is denominator. Which one is bigger? 50 is bigger. So 50 is the numerator. So what is the improper fraction? A fraction in which numerator is bigger is called a improper fraction. Okay, we can define it. How? Write it down. A fraction, okay, in which one is bigger? Numerator is bigger. Numerator is bigger. Are you getting my point? So next, take an example. Suppose we have 11 by 3. Okay. See here. Here 11 is the numerator, 3 is the denominator. And in this case, 11 is larger or bigger, numerator is bigger, and if the numerator is bigger, then it is a improper fraction. Okay. So this type of fraction is called improper fraction. In this way, we can easily differentiate which one is proper fraction and which one is improper fraction. If we have a list out of various fractions, then we can easily differentiate them. Okay, so this much about today's class. In the next class, we will study about various properties of rational number. Till then, thank you.